सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 41 श्री गणेश सिंह। प्रश्न क्रमांक 41। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को गुजरात विधानसभा में शानदार विजय के लिए, ऐतिहासिक विजय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता प्रकट करूंगा कि जब से उन्होंने देश को संभाला तब से सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है और देश आत्मनिर्भर हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के पहले देश में 387 थी। 8 सालों में बढ़कर के 596 हो गई। 54% की वृद्धि हुई है, जो ऐतिहासिक है। क्वेश्चन पूछो। मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। देश में अभी तक 7 एम्स थे, 22 हो गए। मेडिकल कॉलेज 3 चरणों में 157 की स्वीकृति हुई। चौथे चरण में 100 और खोले जाने। माननीय मेरे लोकसभा सीनियर मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। में मेडिकल कॉलेज दूसरे चरण में 60-40% भागीदारी से खोला गया था, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी मिल गया। भवन बनकर तैयार हो गया। 600 बेड का अस्पताल जो बनाया जाना है वह राशि अभी तक नहीं मिली, वह कब तक मिलेगी तथा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कब तक किया जाएगा? माननीय सदस्य प्लीज। क्या माननीय मंत्री जी सतना मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा देखरेख में लिए जाने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने सतना में मेडिकल कॉलेज है उसका अपग्रेडेशन के लिए प्रश्न पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ पहली बार देखा गया है, क्योंकि कोई भी देश को समृद्ध होना है तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि देश के नागरिक स्वस्थ हों। देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और उसके लिए हमने हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में काम करना शुरू किया है। उसके मुताबिक देश में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल भी हो, डॉक्टर भी हो, और डॉक्टर, हॉस्पिटल और सेकेंडरी टर्शरी केयर तक की एक श्रृंखला बननी चाहिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है और माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं बताऊंगा कि आज देश में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, और उसमें जो सुपर स्पेशलिटी वार्ड बनाना है उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहयोग करती है। जो वहाँ से प्रपोजल आएगी सतना की मेडिकल कॉलेज की ओर से और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उसको अपग्रेड करने के लिए पीजी सीट बनाने के लिए हम भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के आकांक्षी जिलों की पहचान की थी, उनमें भी 41 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही MBBS की 10,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य जो तय किया गया है, इससे गांव-गांव में अब डॉक्टर पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्या सतना मेडिकल कॉलेज की जो अभी निर्धारित सीटें हैं उन्हें और बढ़ाने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के स्टूडेंट को देश में ही MBBS एजुकेशन लेने का अवसर मिले, उसके लिए 2014 से लगातार प्रयास हो रहा है, ताकि देश के युवा हमारे विद्यार्थियों को विदेश में जाके पढ़ने की नौबत ना आए। और इसलिए भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीट भी बढ़ाई है, कॉलेज भी बढ़ाई है, और देश में 2014 में हमारे पास जो कॉलेज थी उसमें बढ़ा के आज वो डबल की ओर पहुंच गई है। जो पहले जो सीट थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। MBBS की 2014 में 44,000 सीट थी, वो बढ़ा के आज 96,000 यानी कि 1 लाख तक आने आई है, और आने वाले दिनों में सीट बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा, पीजी सीट, क्योंकि MBBS होने के बाद उसको पीजी करने का अवसर मिले, उसके लिए 2014 में 32,000 सीट थी, उससे बढ़ा के आज 64,000 यानी कि 105% की बढ़ोतरी की गई है।
जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ फैकल्टी हो, पेशेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके आधार पर वो रिकमेंडेशन करते हैं और भारत सरकार उसको सीट बढ़ाने की अप्रूवल देती है। सतना मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़ाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो वहाँ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम अवश्य सीट बढ़ाने की अनुमति देंगे। माननीय सदस्यगण, फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें, भाषण या वक्तव्य न दें। अशोक महादेव नेते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र में मेरे संसद क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर उसके तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित अविकसित क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का भारी अभाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पूर्व भी सदन में गढ़चिरोली में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने हेतु मांग कर चुका हूं तथा मुझे आश्वस्त भी किया गया था कि राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर केंद्र निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेगा, लेकिन राज्य सरकार से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में 2 महीना पूर्व राज्य के डिप्टी सीएम गढ़चिरोली में आए थे। उन्होंने डिप्टी सी में घोषणा भी की। एक मिनट सर, मैं प्रश्न पूछता सर। घोषणा भी की थी, कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को आदेशित भी किया, संबंधित सभी बातें वहां की घोषणा का मेरा क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, इस बहाने मेरा क्वेश्चन है कि इस सदन में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि क्या केंद्र की ओर से राज्य सरकार से गढ़चिरोली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव मंगवाकर वहां कॉलेज की स्थापना करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, 2 दृष्टि से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। एक, भारत सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए स्पॉन्सर करते हैं ताकि भारत सरकार उसमें अनुदान देती है और उसके लिए हम फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 कर चुके हैं और उसमें 157 हमने मेडिकल कॉलेज दी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ स्थापित करे और एनएमसी उसको अप्रूवल देती है। तो अभी भारत सरकार की ओर से फेज़ 4 आएगा, तब उसमें जो लोग वहाँ से रिकमेंडेशन करेंगे, दरखास्त करेंगे तो विचार किया जाएगा। या तो स्टेट गवर्नमेंट स्वयं बनाना चाहती है तो एनएमसी की ओर से हम उसको अप्रूवल अवश्य देंगे। श्री इम्तियाज जलील जी। सर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप 157 मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है, जबकि सवाल में ये पूछा गया है कि फैकल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। सर, मेडिकल कॉलेजेस तो खुल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं। मेरे खुद के औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देयर इज़ अ ह्यूज वैकेंसी। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर जब आप नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं सर, तो एक प्रथा है जो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को कैसा चीट करती है। एमसीआई की टीम जब नई कॉलेज को विजिट करने के लिए आती है तो आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से स्टाफ को बुलाते हैं और एमसीआई को ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पास फैकल्टी पूरी तरह से भर ली गई है करके। तो ये प्रथा को कब आप बंद करेंगे? और आप सिर्फ एक आंकड़ा बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अक्रॉस द स्टेट या कंट्री है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 तरह की बात है। एक कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमें दीजिए, मेडिकल कॉलेज हम देते हैं तो फैकल्टी रखना वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है और हम यहाँ से इंस्पेक्शन भेजते हैं और इंस्पेक्शन के समय पर और उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, एफिडेविट भी लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में है और हम जाके इंस्पेक्शन करते तो वहाँ होती है। वो तो इंटीग्रिटी का सवाल है, स्वयं को ही देखना चाहिए। जो कॉलेज चालू करता है और वहाँ फैकल्टी नहीं रखते तो बच्चों के साथ अच्छा वो नहीं होता। इसलिए मेरा सभी को सुझाव है, फैकल्टी होनी चाहिए। हम भी यहाँ से प्रेस कर रहे हैं और अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि सिस्टम हमने बदल दिया है। क्या एक मेडिकल कॉलेज चलती हो और एक बार ही वहाँ इंस्पेक्शन हो और उसके आधार पर सारा वर्ष का आकलन किया जाए, वो उचित नहीं है। और इसलिए हमने एक यहाँ एनएमसी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है।
वहाँ 16 कैमरा है। 16 कैमरा के माध्यम से कोई भी मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके गेट पे कितने लोग आते हैं, ओपीडी कितनी हो रही है, कितने इंडोर पेशेंट है, सारी इंफॉर्मेशन लाइव होती है और उसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वहाँ फैकल्टी है, वहाँ पेशेंट है, वहाँ इंडोर पेशेंट है, ये सारा आकलन होता है और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि उसको आगे सीट देनी है नहीं देनी है। बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है। पुरानी बात हो चुकी है कि वो ऐसा तैसा गफला करके मेडिकल कॉलेज चलाते थे, ऐसा नहीं चलानी है। हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, हमें क्वालिटी डॉक्टर तैयार करना है और ये करने के लिए हम मेरिट पर जाना चाहते हैं ताकि जिस मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैसिलिटी हो उसको ही देना है। कई मेडिकल कॉलेज ऐसी हमने बंद भी की है और कई मेडिकल कॉलेज के सामने अभी एक्शन होना है। जिसके पास फैकल्टीज नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उसको प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं चलाना चाहिए। वो एक देश के भावी डॉक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है और सरकार उसके लिए कड़ी कार्यवाही कर रही है। माननीय सदस्य बैठ जाइए। एक अच्छी परंपरा नहीं है। मैंने आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया था। आप पूरा मंत्री जी का जवाब होने दीजिए, कभी भी बीच में डिस्टरबेंस न करें। सिट टी.आर. बालू जी। Sir, Chairman, sorry, Speaker, sir. First of all, I take this opportunity to appreciate the Honorable Minister for his pragmatic approach to eradicate the pandemic, which has come which has spread throughout the world. Sir, particularly Tamil Nadu has eradicated the pandemic disease, COVID-19, with the help of our friend, Honorable Health Minister. Whenever CM Tamil Nadu, Mr. Stalin has sent letters to the central government, the Honorable Minister who was in charge of this, who is in charge of this health ministry, has helped a lot. He has sent oxygen through cylinders, through tankers and trains, and also vaccines to adequate, so that the Tamil Nadu has eradicated fully. But sir, now the funny thing is, sir, AIMS Madurai the foundation was laid by Honorable Prime Minister of India during 2009, just before the election. But it has successfully constructed the compound wall. The land is there. You will be surprised to know that within 2 or 3 years, I think on 2022, they are going to take off these classes, MBBS classes, with 50 students in Ramnath Medical College, which is 150 kilometers away from this site. And its mentor institute is in Pondicherry, 400 kilometers from Madurai. This is the funny things which is prevailing there. I want to know from the Honorable Minister, at least see the last election was over. Now the next election is coming in 2024. When are you going to have this the infrastructure, that is the entire building together? Kindly show some light at it. When the project has to be completed quickly. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सम्मानीय बालू जी ने बताया, ये बात सही है कि मदुराई एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, जायका फंड से होना था। उसकी प्राइस 1200 करोड़ रुपया तय की गई थी, लेकिन उस समय के दरमियान समय इसलिए लगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण हम करते ही है, लेकिन एक ऐसी घटना की वजह से जो जायका फंड से वहाँ एम्स बननी थी, जायका ने कोविड क्राइसिस की वजह से उसकी टीम इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी लेट आई। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, फिर से उन्होंने सारा जो एम्स बन रही थी उसका स्ट्रक्चर में, डिज़ाइन में भी कोई चेंजेस किया और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है उसको बढ़ाने के लिए भी सजेशन दिया। इसलिए उसकी प्राइस हो गई 1900 करोड़, 1900 करोड़ हो गई। तो 1900 करोड़ प्राइस को फिर से हमें अप्रूवल के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ी। वो अप्रूवल हो गया, फिर जायका ने भी उसको मान लिया, जायका ने भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया और अभी उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी लगाई गई है। थोड़े दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टेंडर फ्लोट करके, टेंडर फाइनल करके हम उसको तुरंत ही शिलान्यास हो गया है, उसका काम प्रारंभ कर देंगे।
कोई चिंता का कारण नहीं है और वहाँ एक कोई पॉलिटिकल इशू बनाने की माननीय बालू जी मेरी विनंती है कि आप उसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। हमने तय किया है करना है, टेक्निकल विषय की वजह से प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। हम वहाँ मदुराई में एम्स बनाएंगे। हमारे बच्चे ने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया है और यही स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वही एम्स में पढ़ेंगे। वहाँ एक अच्छी एम्स बनेगी, तमिलनाडु जनता की सेवा करेगी। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, भारत सरकार का कमिटमेंट है, वहाँ एम्स बनेगी। केरला एक बैठे बैठे बोलते हैं क्या? 6 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सी श्रीनिवास पाटिल 7 हो गया। महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने की जो संधि दी इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सतारा में जो छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी है उसमें मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्डिंगें और लेबोरेटरी हो नहीं रही। पता नहीं ये बिल्डिंगें और हॉस्टल अगर नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और लेबोरेटरी नहीं हो रही। किसी कारण की वजह से अगर देर हो रही है तो भारत सरकार की कोई कमेटी जाकर अगर स्थानिक कुछ प्रॉब्लम है या ऊपर से कोई प्रॉब्लम तैयार किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो लोग कर उसकी बिल्डिंगें कंप्लीट करके जो बच्चे आशा से छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी में पढ़ना चाहते हैं उनको कोई राहत मिलेगी? ओके। और कब मिलेगी ये आप बताएंगे तो कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है वो सही है कि कई जगह पे भारत सरकार ने स्पॉन्सर करके और स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने उसको अप्रूवल दे दिया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसका कंस्ट्रक्शन करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको संभालती है, हम उसको पैसा देते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया, जिस स्टेट में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कम स्लो चल रहा है या तो नहीं स्टार्ट हुआ है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुरंत ही आप चालू करिए ताकि बच्चों को बाहर और जगह पे रहने की नौबत ना आए, पढ़ने का अच्छा अवसर मिले। और इसलिए मैं भी भारत सरकार की ओर से फॉलोअप ले रहा हूँ। आप भी राज्य सरकार को बोलिए, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 श्री मोहन कुंडारिया जी। 42। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से मंत्री जी को विनती करता हूं कि मेरा क्षेत्र में राजकोट और मोरबी दोनों क्षेत्र में जो पासपोर्ट परियोजना के माध्यम से जो उसका पासपोर्ट निकालने का जो तरीका है वो जल्दी हो, इसलिए पासपोर्ट मेला करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है कि क्या? House that we have a very large diaspora. Around 32 million people are there, Indians who are there abroad, either as NRIs or people of Indian origin. And passport services during the last 8 years has improved very much. I would say that it has increased by around 500%. The number of passport officers for processing of passports, which was 110 before 2014, now stands above 550. And in Gujarat, I would like to inform the honorable member that we have held, in the whole country, we have held from June 2022 onwards, 234 passport melas, and during the next 3 weeks, we are planning to hold another 500 passport melas across the country. So any Indian citizen who would like to have a passport for him, we are there to facilitate and make all efforts so that every Indian gets a passport for him. माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय में जो पहला एप्लीकेशन आती थी उससे 2 गुना से ज़्यादा आ रही है, इसलिए जो कर्मचारी की कमी है वो पूरा करने के लिए सरकार कुछ सोच रहा है कि क्या? Sir, during the last 1 year, in Gujarat also, the number of passports that we have been issuing in all these offices, whatever is the number of application, we are taking care of that. And wherever request is there, those requests, every effort is being undertaken to fulfill those requests. श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल पूछने की अनुमति दी।
अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ज़िला है, उसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर और उसे नवा शहर भी कहते हैं। वहाँ के बहुत लोग विदेशों में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। मैं पिछले 3.5 साल से विदेश मंत्री जी से ये विनती कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया जाए। पहले इनके मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया कि हमारे पास जगह नहीं है पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए। हमने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एक आलीशान भवन का निर्माण करवाया, म्यूनिसिपल काउंसिल और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको मिलकर। पिछले 1 साल से वो जो भवन है वो खाली पड़ा हुआ है। इनके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जालंधर वाले लगातार और निरंतर लिख के भेज रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करना है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करेगी, और करेगी तो कितनी देर में करेगी, और अगर नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है, और कहीं ये तो नहीं क्योंकि ये एक विपक्ष के सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप काम नहीं करना चाहते। Sir, during the last 8 years, the government of Narendra Modi ji has been extending the facility of passport sevas across the country, irrespective of who the parliament member is. Whether it is opposition ruled state or whether it is a constituency represented by by a member from the opposition, I have personally inaugurated the passport seva kendras in the constituencies of members from the Congress party in Kerala. So this is, we have never made it a criterion for allowing passport seva kendras. What we have done is, from the earlier situation where there were limited number of passport seva kendras, we extended it to every Lok Sabha constituency, subject to the condition that there is facility by the post offices. Where that facility is there, we will definitely have been taking steps to see that passport seva kendras, post office passport seva kendras are open. डॉक्टर टी सुमति। आपकी अनुमति से मंत्री जी, सवाल सिर्फ इतना है, the building is ready, the infrastructure is टी सुमति। All you need to do is, operationalize the passport office. Tell me, how long will it take for you to operationalize the passport office? I am asking you a direct question. Give me a direct answer. Thank you very much, sir. Sir, I'd like to bring the Honorable Minister an attention of an important issue. Sir, recently K. Nalini, a sister of us from Sri Lanka, brethren, a Sri Lankan refugee and a resident of a refugee camp in Trichy, received her passport as directed by the High Court. She has fled from Sri Lanka back in 1980s, the initial stages of the Black July, which was afterwards followed by the genocide of our brethren Tamilians there. And she has been living in the refugee camp ever since with her family. Sir, in this scenario at the backdrop, I would like to ask, does the ministry currently issue passports, or does it have plans to issue passports to children of the Sri Lankan born in the Indian territory? And if so, has any passport has been issued, or do you have any plans to issue it in the future? Because it's a very, very important issue, sir. Thank you. Sir, the question, the original question is related to passport melas in the state of Gujarat. So this is a policy matter which is not connected with the original question. So I would like to request the honorable member, I will request her to, to come over, and I can definitely discuss with her the concern that she wants to raise. श्रीमती चिंता अनुराधा। Regional passport officers have to deal with 1,000 to 1,200 appointments on a daily basis, sir. So does the government plan to establish more regional passport officers to decrease this burden, thus reducing the delays caused in getting appointments, sir? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the member through you that we have in every Lok Sabha constituency, our endeavor is to see that in every Lok Sabha constituency,
there is a post office passport seva kendra at the minimum. And and another thing is, we have now made it a system that anybody can apply for a passport anywhere in the country. It's not required that he should apply in his own area. So the number of applications that come, we are at present in a position where we can deal with the number of applications, and whenever the pendency increases, we have been holding passport melas. As I mentioned earlier, 500 such melas are being organized in the coming 3 weeks of this year, this month, so that the pendency is reduced. So I would like to inform the honorable member that the number of applications, on the basis of that, every effort will be undertaken to see that no person who applies is denied of getting a passport. दादा, अब प्रश्नकाल के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम चुनकर आए उन मान्य सदस्यों को मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, मोहम्मद ए आरिफ। 43. मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table in the House. Sir, first of all, I would like to extend my sincere thanks to the Honorable Minister for identifying 4 projects under Sagarmala in my parliamentary constituency. Out of these, Alappuzha Heritage Project Maritime Museum, 250 crores, is very important. In addition to these 4 projects, the Kerala Maritime Board is understood to have prepared a project called Alappuzha Marina cum Cargo Port for the development of Alappuzha Port, which is suspected to cost about only 50 crores only. Whether the government will consider including the project under Sagarmala and provide the financial assistance. And I would like to know from the Honorable Minister the progress made in implementing the above mentioned the Alappuzha Heritage Project Maritime Museum. Respected Speaker, sir, I am especially thankful to respected Member Parliament, Mr. Arif. And Kerala, we all know, it's a God-owned state, one of the most beautiful states in the country. And God's own, like, that's God owns, like. And particularly in the tourism sector, we have discovered a lot of potentials are there, whether in the backwater, whether the greenery, whether the landscape and all the culture and heritage. So, Honorable Member Parliament has requested by writing a letter to me regarding this particular project. I have already reviewed all the project, and we are now waiting the state government of Kerala to send a proposal. Once we receive the proposal, we are definitely going to take up it very positively. Thank you. Honorable Member Supplementary. Sir. Alappuzha Lighthouse is a heritage structure. The feasibility report and the architectural design has already been submitted through the Directorate of Lighthouses in Cochin for the construction of an external lift for the benefit of elderly people, those who are difficult to climb the stairs. Whether the government will expedite the sanction, the estimate, and take necessary steps for its early completion at least by the middle of 2023. Thank you, sir. Respected Chairman, sir, this particular project, as you know, it is all being very carefully monitored by CRZ and all other agencies related to environment. And in this regard, the concerned kind of agencies, they are also, this particular matter has been very carefully examining. And once we get the proposal
then definitely we are going to take it up. Thank you. Mimi Chakravarti. Thank you, sir. Thank you, sir, for letting me speak as we are talking about the Sagar Mela project, and as I hail from Bengal, so I would like to know what is happening in my state, a detailed development and present status of the Haldia-based Sagar Mela project of West Bengal and the progress of Haldia Dock Complex Kolkata Port Trust on the projects which have completed DPR and the status of the expressway from Panagarh to Durgapur to Haldia therefore. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I would like to answer to the honorable member through you that we have taken, and our honorable Prime Minister has taken so many initiatives by the Sagarmala program in 7,500 kilometers coastal area, also 14,500 kilometers in inland waterways. So especially I would like to mention that to the honorable member is we already make Cochin Shipyard, Haldia Cochin Shipyard Limited shipbuilding Hugli Cochin Shipyard sorry? No, we already made it. Listen, better. Excuse. Respected Speaker, sir, regarding this particular project, let me tell you very frankly, Honorable Prime Minister's vision through Sagarmala program is mainly to develop the coastal area of 7,500 kilometers of the country, along with the inland waterways, 14,500 kilometers. And because of this, under the Sagarmala program, we have identified 802 numbers of projects. And out of this, so far, 220 projects have been already completed. 220 projects is under implementation, rest are under different stages of development. And in the recent past, by going through the detailed consultation with all the stakeholders, state government, state maritime boards, and others like stakeholders, so that, as you know, this is a program which is done through conversion mode. And that is, excuse me, sir. And I believe the Honorable Member of Parliament, if you want to have the details about your specific question, definitely I am going to hand over you the detailed copy after this, like on this particular. Let me tell you, you are quite senior like Member of Parliament. I respect you a lot. Soumitra Khan. So that is why I believe all the project under Sagarmala program, whether it is port modernization, whether it is port-led connectivity, port-led industrial development, and port-like kind of coastal community development, all these parameters involved in this particular program has been very seriously taken up. As you know, with investment worth of rupees 5.5 lakhs crores, this particular program is aimed to be completed in the next 2035. So this is the target plan, and we are proceeding very comfortably with the support of all other stakeholders. Thank you. Soumitra Khan ji. सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका माध्यम से जानना मेरा पूछना है सर नवद्वीप मायापुर गंगा और सागर मेला दीघा ये जितने सारे कोस्टल एरिया है भारत सरकार हर जगह में काम कर रहा है तो ये जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया है क्या खुद अपन से कितना काम कर रहा है ये डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म के लिए माननीय मंत्री जी In this aspect, whatever initiative we have taken, state-wise, will give you the details like figures. Because
Today, this particular question was pertaining to the tourism importance of Kerala. So I believe honorable member will definitely get the details after this question is over. Shri I.B. Eden. Sir, thank you, sir. Sir, the question is related to coastal tourism. Sir, if coastal tourism have to be developed, the life and livelihood of the fishermen have to be much, much better condition. Sir, after 2015, not a single rupee have been spent by the central government, the government of India, for building the sea walls in the coastal belt and the groins in the coastal belt. Sagarmala has got huge amount of money, and Sagarmala is implementing, the port ministry is implementing a lot of developmental projects. I thank the Honorable Minister for developing the Topumbadi Fisheries Harbour, which is one of the major, which has one of the major catches for the fishermen, and their livelihood is dependent on that. I appreciate the project. You should come for the inauguration as well. I have requested you. Sir, the point is, we should give money from the Sagarmala project to develop the sea belt, sea coast, to build the sea walls and the groins. Will the government, the ministry take initiatives for the development of the harbors as well as the fishermen community as a large? Respected Speaker, sir, if we get any proposal of this kind from the respective state government, definitely we'll look into the matter. Question number 44, Shri Girish Bhalchand Bapat. माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table, sir. श्री राहुल शिवाले, श्री N.K. प्रेमचंदन जी. Sir, regarding the coastal development and the shipping, I would like to ask a specific question to the Honorable Minister. When Sri Mansukh Mandavia ji was the Minister for Shipping and Ports, he has convened a meeting of all the coastal members of Parliament and had a detailed discussion about the comprehensive development of the coastal area, including the shipping sector. And the project name is Sagar Tak Mala project, such comprehensive project was there. It is quite, and we have submitted number of projects for the development of the coastal area. I would like to know from the Honorable Minister, what is the fate of that project, which was one of the dream project of the Honorable Prime Minister. That was the illustration made at the time when the meeting was convened and it was presented at the time when the then Minister was there. So I would like to know from the Honorable Minister, from my constituency, Kollam also, it is included in the Sagarmala project, but unfortunately nothing has happened after having that online meeting and submission of the projects from various coastal constituencies. What is the fate of it? That is a specific question which I would like to know. Thank you very much, sir. Respected Speaker, sir, Honorable Member Parliament has highlighted some of the points from related to his constituency. I would like to request through you, sir, if you have all the list of those like projects, please hand over to me. I'll take a look. Srimati Kanimoji. Thank you, sir. The answer says that, that the center's objectives include the promotion of circular economy and capacity. So mic is not. So the mic is not. So the reply says that the objective is to develop and promote circular economy and capacity development. I thank the Minister for including the Thoothukudi port also into this. But already there has been a promise that Thoothukudi port will be converted into a trans-shipment hub. But I don't know what progress has happened there. And I also would like to ask whether the local stakeholders will be included in these projects. And whether it will be ensured that the employment is generated in the local areas where these projects are taken up, because in the Thoothukudi port itself, when the CSR funds are being given, it's given to other states. The local people do not get any benefit out of the CSR funds from the port.
So I request the minister to ensure that local people will get opportunities. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, after detailed consultation with all the stakeholders, we have included another 567 projects that is mainly for the holistic development of coastal community in all the coastal districts. So that is the principal objective. And with a worth investment of 58,000 crores. So within that particular scheme, we could definitely include, as per the proposal received from the concerned state government, because as you know, this particular Sagarmala program is always implemented in consultation and in association with all other stakeholders. So I believe whatever, I think little bit of apprehension you have in your mind, you need not have to worry. We are very transparent. Honorable Prime Minister's direction, this ministry is always working hard for the cause of the country, and it is full of transparency and accountability. I believe whatever we are doing, it is only to benefit the coastal community, whether it is fishermen and all other eligible boys and girls, whoever is efficient enough, who have had their skill, and even we are also giving skill to those youth, so that they could in the near future can be capable enough to handle any kind of challenges of life. Thank you. Question number 45, Sri Kalyan Banerjee ji. Question number 45. Honorable member, question. Sir, the COVID-19 pandemic has disrupted non-COVID healthcare system, leading to concerns about its subsequent impact on non-COVID disease conditions. The diagnosis and management of cancer has also affected. Sir, between March 1 and July, May 31st, 2020, the number of new patients registered, there is a reduction, 54%. Regarding follow-up visit, reduction is 46%. Hospital admissions, reduction, 36%. Outpatient chemotherapy reduction, 37%. Minor surgeries reduction, 52%. Pathological diagnosis reduction, 38%. Number of radiological diagnostic tests reduction, 43%. Sir, in this backdrop, I put a question that whether the government is having a planning to start cancer detection center and initial care service in the rural primary health centers in the country, especially easy to detect earlier stage cancer in breast and prostate. Honorable Speaker, sir, माननीय सदस्य ने बहुत ही कैंसर के बारे में जो चिंता जताई है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि ज़रूर कोविड के कारण कुछ संख्या कम हुई है. बिकॉज ऑफ कोविड कैंसर के पेशेंट का स्क्रीनिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उस टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था. लेकिन आफ्टर कोविड स्क्रीनिंग भी बढ़ गए हैं और लगातार HWC हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, जो कि आपने कहा कि ग्रामीण में हो या शहर में हो, ये सेवाएं बढ़नी चाहिए. सो कीपिंग in that view, sir, we are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. So our aim is to provide and concentration on screening. Sir, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं. उसके अलावा सर PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सेवाएं हैं.
उसके बाद सर टर्शरी केयर के लिए पेशेंट को सुविधा मिले, इसलिए लगातार जैसे पहले जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस एम्स बढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा सर हमारे 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स लगभग बढ़े हैं इन 8 सालों में, और 20 टर्शरी कैंसर केयर सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें सर वेस्ट बंगाल में हमारे 3 TCC है, टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स, और उसके अलावा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एट झज्जर जो कि बहुत बड़ा सेंटर खुला है, और चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है जो कि 460 बेड का। सर ये लगातार प्रयास हो रहा है कि कैंसर के लिए सुविधा हर एक ज़िले में, हर एक स्टेट में उपलब्ध हो। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री माननीय। My question was specifically for the rural and primary health center. Anyway, you have given some answers in respect of the city. Now, my second question is whether the government is having any plan to expand the scope and function of population-based cancer registers centers, which presently covers 10% of the population of India, from 38 centers to all major cancer research hospitals of the states and districts in the country. Regarding the registry, Honorable Speaker, sir, through you, sir, I would like to mention that as per the National Cancer Registry Program, that estimated number of cancer as in 2020 is 13,92,000. Sir, the estimated projected increase is 12.8%. सर जो चिंता जताई है वो पहले से ही सरकार ने उस पर काम शुरू कर दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू दैट सर 2025 तक ये संख्या 15 लाख तक बढ़ सकती है। ये काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। जैसे आपने कहा सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से सर कि आज लगभग 760 डिस्ट्रिक्ट में हमारे NCD क्लिनिक्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और स्ट्रोक के माध्यम से, जो कि NHM के तहत वो NCD किए जाते हैं सर, आज 707 जिलों में वो भी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर ST हसन। थैंक यू सर। सर हम सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर की समस्या एक विकराल रूप ले रही है देश के अंदर, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनियंत्रित टेलीफोन टावर्स, खाद्य पदार्थों की मिलावट और बेतहाशा इंसेक्टिसाइड का उपयोग कैंसर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या सरकार के पास इन्हें प्रिवेंट करने का कोई उपाय है या कोई स्ट्रेटजी है? जैसे कि आपने अलग अलग कारणों में कैंसर के बारे में चिंता जताई, तो सर ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार हर साल हम करते हैं, तो उसमें यही अवेयर किया जाता है कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किसको हम अवॉइड करें। अलग अलग कारणों के कारण सर आज कैंसर की बढ़ती हुई चिंता हमें नज़र आती है, तो अलग अलग प्रोग्राम और हर एक मिनिस्ट्री के माध्यम से ये प्रोग्राम किए जाते हैं। श्रीमती सुनीता दुग्गल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब गुजरात से आते हैं, तो मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ। इनको मुबारकबाद तो बनती है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ गुजरात की जनता ने जो मैंडेट दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रही थी कि PM नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा सहायता जो है, चाहे जो भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे उसमें हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक, इस तरह के बहुत से जो हमारे मरीज हैं वो PM नेशनल रिलीफ फंड से उनको सहायता मिलती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर फंड जो है वो भी साइमल्टेनियसली उन कैंसर पेशेंट्स के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो उनको भी दे सकते हैं? क्या ये बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है स्पीकर महोदय, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और PM नेशनल रिलीफ फंड से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत संख्या में वहां पर भेजे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सहायता दी भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हम मंत्री जी से आपका विषय आ गया है जी। धन्यवाद स्पीकर। एक्सप्लेन पूरा नहीं करें। माननीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि जैसे
माननीय सदस्य ने कहा कि पीएम केयर फंड के माध्यम से पेशेंट को मदद मिलती है। ज़रूर उसके अलावा सर हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इस कैंसर के पेशेंट को आज मदद दे रही है। उसके अलावा जो रैन के बारे में पूछा माननीय सदस्य ने कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके तहत हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड, सर ये जो पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं वो 15 लाख की अमाउंट को पर पेशेंट की मदद दी जाती है, जिसमें सर आज तक लगभग 2015 से आज तक 107 करोड़ की राशि 15,000 पेशेंट के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है। और इसके अलावा अलग अलग प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र या अमृत के माध्यम से भी सर सुविधा श्री बेनी बानन। Sir, how the government intend to tackle the problem of childhood cancer in the country? According to WHO, has stated that India is a home of 20% of the global cancer burden, with nearly 75,000 Indian children suffering from cancer every year. As per the findings of this NCDIR and WHO, that nearly 49% of pediatric cancer cases in India remain undiagnosed. Sir, what measures does the government plan to take to address these findings? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता जताई वो पहले भी जवाब में आ चुकी है कि चाहे वो चाइल्डहुड कैंसर हो या एडल्ट का कैंसर हो, जिसमें कि हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के लिए NHM के थ्रू NCD क्लिनिक्स जो चला रहे हैं सर, उसमें स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। और RBS के जो हमारा NHM के तहत हम जो RBS के माध्यम से हर ज़िला लेवल में कैंप लगाते हैं जिसमें बच्चे भी हम डायग्नोस करते हैं। थ्रू दैट सर वी आर फोकसिंग ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड साइमल्टेनियसली द ट्रीटमेंट ऑल्सो। थैंक यू। डॉक्टर लोरव फौज। Question number 46. Statement is laid on the table. Honorable member. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Minister, who is also from Northeast, he has given us a very detailed reply on my question of development of river ports and inland waters. I thank you, sir. Sir, here is one specific question I would like to ask. Lakhipur in Assam, which is also Fular Toll, upstream up to Tipaimuk and further on up to Tolbung, this is part of the river Barak. Whether there is any proposal specifically to develop these waterways, and because waterways in this area has been there since the British time, and post-independence, I think it has in some ways been stopped. And so I would further request that if this can be restored again. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, the Honourable Member Parliament has mentioned about the 16 national waterways Barak. And after going through techno-economic feasibility report, we have come to know that it is not feasible because of the rocky surface and rocky kind of existence of in this particular river towards Tipkai. So I believe it is Honourable Member Parliament will very understand that instead of going through the river, which is not being feasible, but we have decided to set up 5 jetties between Jiribam, Tamenglong district of Manipur. This particular jetty will definitely help to have the access of cross like river, trade and also passengers movement. And in this regard, my ministry is very much sincerely working with the help of the government of Manipur. And I believe this will definitely benefit the people living on both sides of the river. Honourable Member Supplementary. Small supplementary, sir. This, as I was just talking, that during the British time, this waterway was already there. And so, yes, we also know that the rivers are shallow. However, with dredging, it can be smaller vessels can go upstream further. So one thing is that the
road systems are also very poor. And that is why people, especially living across the border along this Barak River, they face a lot of communication problems. And so if only the waterways can be developed, right now roadways are also being developed, but it is taking so much time. And from time to time, landslide and other things also hamper transportation. And so the riverways, waterways definitely will act as a boon to the people living across the states, especially in Mizoram and also in Manipur up to Tamenglong. And then, of course, beyond this place called Tolbung, I think it is rocky, and so it is going to be a little problem. So if up to here, you can at least consider that. Thank you, sir. Respected Chairman, sir, as mentioned by Honorable Member Parliament, I think it would be like more better for the commoners' use the access of the draft depth in the different location of the river instead of going through this dredging, because dredging is nowhere feasible. It is totally rocky towards the upstream. And I believe that is why we have requested the Honorable state government of Manipur to prepare their proposals and send to us. And once we receive the proposal, as per the feasibility of those like cross a river kind of jetty to be constructed, and as per their proposal, definitely we'll take it up. Shri Manya Member Abdul Khalik. अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री महोदय ने बताया जोगी घोपा, मेरा क्षेत्र के जोगी घोपा भी एक टर्मिनल होगा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के जरिए, ये टर्मिनल का काम का कितना प्रोग्रेस हुआ, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर शुरू हुआ, शुरू होने के वक्त लोकल एमपी होने के नाते मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ये एक बात है। दूसरा बात है, ये मंत्री जी ने बताया ये 55 घाट 55 घाट असम में फ्लोटिंग टर्मिनल होगा। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, वो भी असम से आते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मुझे नहीं पता बहरी जहाँ पे महापुरुष श्री श्री दामोदर देव के सत्रों भी है, और मंत्री महोदय हमेशा जाते हैं कृष्ण गुरु आश्रम जहाँ से नज़दीक होगा, वो बहरी घाट है या नहीं, या बागबर घाट है या नहीं, नहीं है तो इंक्लूड करना चाहिए। और ताराबारी, ब्रिटिश टाइम में ताराबारी बोल के घाट था, वो घाट का डेवलपमेंट का एजेंडा लेगा या नहीं, या बहरी घाट को ही ताराबारी नामकरण करेगा, ये भी मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। और एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो बेकी रिवर, बेकी बेसिन जो नेशनल वाटरवेज में आते हैं, ये बेकी बेसिन का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? मेरे पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कुछ नहीं किया अभी तक। मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ ये कुछ करने के लिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद जी ने जो कही है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो आसाम से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ माननीय संसद जी डिटेल में चर्चा करें और हमको हमारा पास जो भी सूची है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं, इसके बारे में मैं संसद जी को निश्चित रूप से अवगत करूँगा। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव। Thank you, sir. At the outset, I'd like to compliment the Honourable Minister on her outstanding Honourable Member, work. question number 47. Question number 47, sir. माननीय मंत्री जी। पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। Thank you, sir. I'd like to compliment the Honourable Minister for her outstanding work for the welfare of women and children. Odisha, sir, is still lagging behind in terms of various parameters of malnutrition, especially in the rural areas with huge populations of the scheduled castes and tribes. Mine is an aspirational district. My question is whether the government is considering a special intervention with a focused approach in aspirational districts to achieve targets under Poshan Abhiyan and Sustainable Development Goals. Thank you. Sir, I would like to, through you, inform the Honourable Member
that aspirational districts are priority areas for the government, not only from the perspective of Ministry of Women and Child Development, but also it seeks a partnership and convergence between 18 ministries, which include ministries such as Jal Shakti, so that issues of sanitation and safe drinking water can be addressed, Ministry of Health, which assists us, especially in aspirational district, from the perspective of the health of pregnant mothers and lactating mothers and small children and the medical challenges they may so face. I would like to, sir, through you, draw the attention of the honourable member that to ensure that there is a convergence at the district level and at the state level, we in the ministry had issued guidelines so that at the state level, the state chief secretary, at the district level, the district administrator, being the collector, can converge these very ministries, and a robust system technologically and otherwise can be made available. The Prime Minister has prioritized especially nutritional delivery systems in aspirational district through a project also called Saksham Anganwadi. It is the endeavor of the government to ensure that over 2 lakh Anganwadis across the country are also enhanced in terms of services, and substantial infrastructure also is increased there so that the needs nutritional of women and children can be met through this. क्वेश्चन और माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। बरसों बरस मनाया रब ने।